Okay, so we were up to in the last lecture about the socio-cultural issues. So this was the topic we were supposed to start. Structural transformation and social problems. They are saying several, let me see. Okay. Several attempts have been made to understand Indian social problems in terms of structural transformation. In the Indian context, the following three patterns of transformation were visible: Sanskritization, Westernization, and modernization. So जो ट्रांसफॉर्म हुई है इंडियन सोसाइटी वो बोल रहे हैं तीन बेसिस हैं इसके. These are the three bases: Sanskritization, Westernization, and modernization. The first one is a process through which lower castes achieved upward social mobility, either by adventure or by the emulating the customs and rituals of the upper caste. It is a cultural process where changes in social status and occupations as a consequence of the upward mobility brought up by the Sanskritization makes it into a structural process. So ये first जो process उसमें बता रहे हैं कि what it happens as India was divided into different castes. So if we generalize, there were upper caste and lower caste. So those who were considered as lower caste, they have started, coming up. You can say that because they have started, uh, somehow, following the process of, celebrating the customs or practicing the customs and rituals of the upper caste. So this is somehow a process which is called as a Sanskritization. The contact with the West, particularly with England, set in motion another process of transmission in India known as Westernization. It is characterized by Western patterns of administration, legal system, and education through the medium of English language. Under the impact of the Western way of life, say a sizable section of educated and urbanized Indian adopted Western style of dress, food, drink, speech, and manners. The evolution of the West inculcated the values of Western democracy, industrialization, and capitalism. There are cultural as well as structural aspects of Westernization. It brought about the structural changes by growth of modern occupations related with modern education, economy, industry, emergence of urban centers with the induction of colonial administration and the rise of urban middle class under the impact of education, administration, judiciary, and press. So what they're trying to tell, first is a Sanskritization, and second one is a Westernization. So what they're trying, what do you mean by Westernization? Like our society have started following the rituals, the setup of Western countries, especially we are living under the impact of England. Right now, we can say that we have the impact of a lot of other countries, but initially we have started getting the impact from England because we were under their rule. So we have started seeing how they are behaving, what is their system, their administration, their legal system, their education, and even we can see, Western impact on our dresses, on our food, our drink, speech, manner we do. So everything we can say that that is somehow the impact of Westernization. We can see sometimes we do not feel. Sometimes we feel like no, the way we are living, we were like that, but it is not the truth because the way we were living that was different because our culture was different, our dresses were different, our speech, our food was different. Pizza, burger, cold drinks. This was not our food, but now it is a part of our food. Every day we are having, when you have what do you call the free time or a leisure time when students they go to canteens, they order maximum of the Western foods. I would say this thing. So that is impact. Another thing, our dresses again, the dresses like jeans, whatever dresses we are wearing right now. This is all impact of the Western. You can say that it's not only on our dresses or food, the way we speak, the way we behave, our democracy we are following, like how they are, practicing the democracy in their country, industrialization, everything we are following from them. So that is again the impact they are saying. This is how even they are saying the impact can be seen on judiciary and press. Even they are also following the Western styles like how they are practicing in their countries.
As explained earlier, modernization and westernization are closely related in the Indian context. The major component of modernization, such as education, political participation, urbanization, migration, mobility, money market, modern technology, communication network, and industrialization, were introduced by the colonial administration. So these are things they have said that it has come, it has emerged at the time of colonial period when Britishers were ruling. We learned these things. Migration, that's very important point because we see in Punjab, like a lot of families are migrating from here to other countries. Students are still going to other countries for migration. So that is the impact. Impact because firstly we started this thing at the time of colonial period because our people have started migrating to England. A lot of Indians are living in England from that period. So that is how their uh, relatives, those who are over there, they have started somehow having that impact of that we should also migrate. So these are some of the examples I could give you. They have said that is also the example of modernization and westernization because these are very close related. These are very closely interrelated. They received an impetus in the post-independence period. The independent India adopted a modern constitution, founded a secular democratic state, and followed the policy of planned socio-economic development, democratic decentralization, and the policy of protective discrimination for the weaker sections. So they are saying like after independence, what India has adopted, India has also tried to become what they were seeing in the Western countries. So what was that? We were always wanting to become a secular country. We were seeing the socio-economic, like social and economic development in our country, decentralization, like the powers should be distributed. It should not be in hand of a one person. So these, and of course, the upliftment of the weaker section. So these were some of the things which we were wanting by seeing other countries, other means of Western or the developed countries. The real question is how these patterns of structural transformation have generated social problems in India. In spite of several contradictions existing in Indian society, revolution as defined by Marxists and explained in Unit 1 did not take place in India. The process of transformation represented by Sanskritization, Westernization, and modernization have been by and large smooth and gradual in the Indian context. Now they're saying these are the things we are studying, like how the development or how we have got impacted. Now the real issue is because through these things, how the social problems it has also hit in our society. Because as we have said that we are already fighting with some of the social problems which have prevailed in our society due to the earlier impact of sociology, or we can say that the social processes. But somehow uh, westernization it has come, but still we are fighting with a lot of social issues. स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन एंड इनकंसिस्टेंसीज इनकंसिस्टेंसी क्यों हुई, उन्होंने बोला है इसको दो पॉइंट्स में बांटने की कोशिश कर रहे हैं. फॉलोइंग आर दी टू कंसेप्ट्स में help us in understanding the relationship between structural transformation and social problems. Structural breakdown and structural inconsistencies. The concept of structural breakdown has been used by Talcott, Pierce, Parsons to means the systematic rigidity which tries to resist or retard social transformation and thus leads to the breakdown of the system or the social disorganization. They're saying, what do you mean by structural breakdown? कह रहे हैं कि इसको जो टालकॉट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो गई थी, रिजिड हो गया था सिस्टम में, जिसके कारण जो है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो थी वो रुक गई थी और जिट लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम, जिसके कारण जो सारा जो सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हुआ. In the third world countries, there is a growing urge for modernization in the post-independence period. These countries borrowed parliamentary democracy, adult franchisee, modern constitution without the supporting structural base of economy, industrialization, modern technology, literacy, and normative base uh, of rationality, civic culture, and secular values. कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमने adopt तो की, but we have forgotten
Like, without the supporting structural base, it would not be more of the helpful. Because why? Because if we don't have the understanding, for example, if you talk on one of the issue, if we don't have understanding on that issue, we will start we will start making joke of it, because we don't have the exact sense of understanding what this topic is about. So first of all, literacy, education, these things, the sport should be there to understand these things. As a result, in several of the ex-colonial societies, democracy could not function successfully. The ethnic, communal, tribal, caste, and religion aspirations have become so strong that they are eroding even the basic structures of democracy. Modern state and civic society. This is so obvious in the case of India, Pakistan, Sri Lanka, and in many countries of Africa. The impact of social transformation on the Indian society is visible on the following manner. So, an example, sabhi ki riya, because India was a subcontinent before independence. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, these were all one country. So they are trying to say the impact, or even they have given some of the African countries, those who are quite similar to in situation with India. Uh, on the one hand, three patterns of transformation, as mentioned earlier, has created new problems of adjustment. ट्रांसफॉर्मेशन तो आई, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके साथ साथ नई प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो गई. On the other hand, occasionally the process of social transformation has been resisted. In this context, we may cite examples of the resistance of the urge of the upward social mobility of the scheduled caste and the scheduled tribes, denial of the rightful claims of women, and the obstructing land reforms by hook or crook. क्या दिक्कतें आनी शुरू हो गई? सी लाइक सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो कास्ट सिस्टम में थी, क्योंकि SC ST को जो डेवलपमेंट में प्रोसेस हो रहा था वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी. वुमेन की जो राइट्स थे उनके ऊपर दिक्कत आ रही थी, और जो जमींदारी सिस्टम हम कह सकते हैं जिसमें जो लैंड्स थी वो एक ही बंदे के पास ज्यादा होती थी, बाकी सब जो किसान थे उसके अंडर काम करते थे. somehow these were some of the problems at that time, which during the transformation we were facing. In the Indian context, structural inconsistencies are also visible. They are there are symptoms as well the cause of social disorganization and social problems. By structural inconsistencies is meant the existence of two opposite substructures within the same structure which are not consistent with each other. In India, on the one hand, there are highly sophisticated modern metropolitan upper and upper middle class influenced by consumerism. एक तरफ तो ये class खड़ी थी. On the other hand, there is a large number of Indian people who live in inaccessible tribal and rural areas and whom I have not seen even a train. A small section of the Indian society belongs to the jet age, where a large Indian population even today depend on the bullock cart. This situation is a clear indicator of the gap between the rich and the poor and rural and the urban, creating a gulf between the different groups and strata. These structural inconsistencies are the indicators of poverty, inequality, inaccessibility and deprivation existing in Indian society. ये वो दिक्कतें थी, ये वो social problems थी जो पुरानी सती प्रथा एंड ऑल उससे दूर होकर अब इसमें अंदर हम जिसको बोलते हैं जूझने जा रहे थे. बिकॉज एक जगह तो एक सोसाइटी है जो बहुत मॉडर्न है, अपर मिडिल क्लास में है, जिनको सब सहूलतें प्राप्त हैं. दूसरी जगह ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन भी नहीं देखी है, उनको पता नहीं है ट्रेन क्या होती है, ट्रेन का सफर भी नहीं शायद किया हुआ था. तो एक तरफ हम जेट एज की बात करें, दूसरी तरफ लोग अभी भी जो हल हैं वो बुलक मतलब बैलों के साथ अपने खेतों में चला रहे हैं. तो यू कैन सी कि जो गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था सोसाइटी के बीच, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स सोशल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई वो थी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनएसेसिबिलिटी, डेप्रिवेशन. ये सब चीजें अब जो है इनके साथ जुड़ना शुरू हो गया. Gunnar Myrdal, in his book Asian Trauma, discussed the problems posed by modernization in several Asian countries, including India. He feels that strong states, effective governments with their capacity to take hard decisions and strict enforcement of the rule of law are the major features of modern European society. But in South Asian countries in general and in India in particular, an approach is being followed by the ruling elite in the post-independence period, which has been done as the policy of soft state by Mitra. The democratization of polity has further strengthened this policy. It has weakened the capacity of state in enforcing the rule of law.
As a result, there is an increasing rate of crime, violence, terrorism. ये सब चीजें नई निकल के आई हैं, पहले कोई टेररिज्म नहीं होता था। दीज थिंग्स, क्राइम रेट बढ़े हैं, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों में पहले टॉलरेंस बहुत होती थी, आपस में प्यार होता था, लेकिन सब चीजों की जगह पे जो सोशल प्रॉब्लम्स इन्होंने लिया, वॉल्यूशन ऑफ लॉ, करप्शन इन द पब्लिक लाइफ एंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पब्लिक मतलब सरकारी क्षेत्र जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में बोल रहे हैं, वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, क्राइम बहुत ज्यादा आ चुका है। क्रिमिनलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स का दूसरा नाम ही जिसको बोल सकते हैं हम क्रिमिनलाइजेशन बोल रहे हैं, बिकॉज वी ऑल सी around us like what it is happening, what politicians are doing. So these are some of problems which it has come these days, which we are facing. तो इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्राइब द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फेसेस, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कंटेम्पररी, जो हमने ये पीरियड पढ़े हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोशल फैक्टर्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स। Social problem is a situation that objectively exists in a particular society and is subjectively accepted as undesirable by society. Social problems, therefore, is relative to society or has a social context. Hence, study of social problems requires understanding of the social context. A social context may be discussed in a historical or structural perspective. Earlier, we have explained how in various historical phases in India, the different types of social problems emerged. Now, let us try to understand the major social factors which are associated with the various problems. तो कह रहे हैं सोशल फैक्टर्स क्या हैं, वो बता रहे हैं कि हमने ये चीजें तो बड़ी कि हाँ पुराने टाइम में ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, ये सोशल इवल्स थी, बट कौन कौन से वो फैक्टर्स थे हिस्ट्री के बीच में हम जाते हुए इसको पढ़ सकते हैं कि जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स थी जिसको हम उस टाइम पे फेस कर रहे थे। So what were those major social factors? Study of Indian social problems, their emergence and persistence in Indian society requires an understanding of Indian social situation in which the problem exists. One has to analyze the social factors that are relevant to the understanding of social problems in India. Some of the major factors that constitute the social context in India as far as social problems are concerned are as follows. इसको उन्होंने इस चीजों में आगे बांटने की कोशिश की है इन फैक्टर्स को। heterogeneity of Indian population, cultural elements, economy, poverty and education, state and polity, urbanization and industrialization. Let's discuss first one, that is heterogeneity of Indian population. इसके अंदर heterogeneity कौन सी सोसाइटी होती है जिसको बोलते हैं there are several religions, caste, language, tribal groups, उसमें काफी लोग ग्रुप्स में अलग अलग एरिया से रह रहे होते हैं। heterogeneous nature of the Indian population has been the cause of a number of social problems in India. क्यों? फर्स्ट बता रहे हैं रिलीजन, तो वो फर्स्ट रीजन इन्होंने रिलीजन को बताया है। द मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट रिलीजन्स हैज कम्युनिज्म इन इंडिया। हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, हम किसी भी कंट्री के नाम ले लें तो यू वुड सी हमारी तरफ से उधर चले गए हैं तो लोग अदरवाइज इफ वी सी देयर वाज ओनली वन रिलीजन, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम इन देयर कम्युनिटी एंड देयर सोसाइटी। हमारी में बहुत दिक्कत है कि हमारी मल्टी रिलीजन सोसाइटी है। The phenomena of communalism as a vitiated form of inter-religious groups relationship, particularly between Hindus and Muslims, is a grave problem in India. It has its historical linkage with the Muslim invasion in India, early conflicts between Hindus and Muslims, British rule and policy of encouraging communal divide, competition for political power, service and resources. तो बताने की कोशिश कर रहे हैं पुराना टाइम जो था उस टाइम पे ये चीज काफी राइवलरी क्यों हुई, एक रीजन पहले वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वाज दी, जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको लिंक कर रहे हैं किसके साथ, दे आर ट्राइंग टू लिंक इट विद द इन्वेजन्स, जो हमले हुए हैं बाहर से, बिकॉज इंडिया वाज हिंदू कंट्री इन्वेडेड बाय मुगल्स, वी कैन से दिस थिंग। इसके कारण एक सबसे पहली जो रिफ्ट जिसके बीच में जो निकल के आई, दैट वाज द मेन रीजन। उसके बाद धीरे 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 दे हैव सेड दैट ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने इस चीज को और बढ़ाया, इन्होंने उस चीज को और डिफरेंसेस क्रिएट किए। इतने ज्यादा नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्रिएट हो गए, बिकॉज दे वर बिलीविंग ऑन डिवाइड एंड रूल। वो बोल रहे थे कि अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कंट्री बहुत बड़ी बन जाएगी और उनके लिए बहुत बड़ी
प्रॉब्लम हो जाती है। यू कैन इमेजिन अगर आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कंट्री होती तो शायद अमेरिका नहीं, इंडिया वर्ल्ड पावर होता। तो इस चीज को उन्होंने फ्यूचर में सोचते हुए इस चीज के लिए उन्होंने जो आपस में इनके डिफरेंसेस के बीच थे वो होने शुरू कर दिए। एंड धीरे धीरे वी सी कि एक डिफरेंट नेशन ही निकल के सामने आया जिसको पाकिस्तान नाम रखा गया और बोला गया कि शायद ये मुस्लिम जिसको बोल सकते हैं रिलीजन के ऊपर ये बेस्ड इसको बताया गया। लेकिन बेसिकली दैट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि पहले भी ये लोग एक ही कंट्री में रह रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में और पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं वहां पर भी। सो डिफरेंस क्या है ये आपके सामने है। दैट वाज द मेन रीजन जिसके कारण ये डिफरेंसेस आए। Gradually, the problem of communalism has affected the Hindu-Sikh relationship also. आगे उन्होंने बोला कि ये चीज differences आए। There is a sizable group of Sikhs in India. They are concentrated in a relatively developed region, Punjab of the country. Their existence as a powerful community in the region as a minority in the larger nation is to be taken into consideration. Is undertaking the emergence of communal politics followed by the terrorism in Punjab. In this context, it must be noted that by the large, both Hindus and Sikhs and Punjab have shown a great deal of understanding and amity in the midst of terrorism. The Indian concept of secularism accepts all religions as equal and does not discriminate one religion against other. As indicated by Mardil, the policy of a soft state and not taking hard decisions against communal organizations has also aggravated problems of communism in India. The consideration of electoral gains by using religions have also contributed in the growth of communism post-independence period of India. सॉफ्ट स्टेट की बात करें कि जो हमने ऊपर भी पढ़ी है ये बात, वो करें कि ये चीज एक्चुअली में इंडिया को हार्म करती रही है, क्योंकि धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही जोड़ने देना चाहिए। पहले ही इसको सॉफ्ट रखा गया, इसी कारण आपके सामने है बहुत सारी पार्टीज हैं वो अपने आप को हिंदू पार्टीज बोलती हैं, बहुत सारी पार्टीज वो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बोलते हैं, बहुत सारी पार्टीज वो अपने को सिख पार्टीज बोलती हैं। तो रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कोई रोल नहीं होना चाहिए था। और यही वो बोल रहे हैं कि मेन कारण बना जब पॉलिटिक्स इसमें आ गई पावर के लिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दैट बिकॉज ऑफ ये सीइंग कि जो क्रिमिनल राइट्स होते हैं, जो आपस में दंगे फसाद होते हैं, इसका ये बहुत बड़ा कारण होता है। हम लोगों को भी पता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज कास्ट। Another element of Indian social structure is the caste system. The caste system has been divided Indian population into numerous groups that enter into relationship of various types and degrees among them. अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं किसको, कास्ट को। जैसे कि ये भी एक धर्म की तरह ही दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज पहले तो हमारे यहाँ पे धर्म ही बहुत ज्यादा है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, उनके एक रिलीजन है चल रहा है, अभी हमारे यहाँ पे रिलीजन ही बहुत हो गई, वहां से अभी निकले नहीं थे तो कास्ट आ गई। कास्ट में बहुत सारी कास्ट आगे से आगे सब कैटेगरीज बहुत बनी हुई है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि आगे से आगे हम बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, जिसके कारण ये बोलते हैं कि ये भी एक मेन फैक्टर है सोशल प्रॉब्लम्स का। The practice of mobilization on the basis of caste and favor or disfavor shown in education and employment on caste consideration are the major features of casteism. कह रहे हैं कास्ट के ऊपर कई बार बहुत सारी बायसनेस हो जाती है। आपने इंडिया में स्पेशली ये चीज होती है कि वन कास्ट वो है दूसरी कास्ट को पसंद नहीं करती है। इसी चक्कर में कई बार जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, डिजर्विंग लोग हैं, वो एक्चुअल चीज पाने से रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैंग्वेज, दैट्स अगेन तीसरी प्रॉब्लम आ गई। हम एक लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। इंग्लैंड की बात करें इंग्लिश बोलेंगे, तो कहीं भी फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच बोलेंगे, जर्मनी जाएंगे तो जर्मन बोलेंगे, इंडिया में जाएंगे तो 28-30 लैंग्वेजेस बोलेंगे। तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे लैंग्वेज भी एक नहीं है जिससे हम लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। एवरी पार्ट इट हैज देयर ओन लैंग्वेज। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इंग्लिश ने इस चीज को, हम हिंदी को अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं इंग्लिश ने इस चीज को बल्कि जिसको बोलते हैं भरने की कोशिश की है। बिकॉज राइट नाउ वी ऑल नो दिस थिंग कि हमारी जो मेन एजुकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं हम लोग जो प्राइवेट की अगर स्पेशली बात करें तो इंग्लिश ही कॉमन लैंग्वेज है, जिस कारण कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हैं। अगर हम साउथ में जाकर आज जॉब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, हिंदी के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को हिंदी नहीं आती है। सो ये भी एक जिसको बोल सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, एक सोशल फैक्टर है हमारे यहाँ पे। सो
That is one thing they would like to discuss. Another one is the tribes. India is a country with a large population of tribal areas. हमें आज भी लगता है कि सारा जो कंट्री है वो डेवलप हो चुका है, कहीं कोई ट्राइबल नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप बहुत सारी एरियाज हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे चले जाओ तो यू वुड फाइंड आउट वहाँ पे भी बहुत सारी, जैसे नागालैंड हो गया ना, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स अभी भी हैं, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके कारण बैकवर्डनेस है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर रही हैं हमारे सामने भी, जिसका कभी ना कभी निकल के आता है आपके सामने जब वहाँ पे कोई वायलेंस होती है ना, तो ये भी एक फैक्टर है। देन माइनॉरिटीज, heterogeneity of Indian population has given rise to the problem of minorities in India। कह रहे हैं अब इतना ज्यादा जब फैलाव हुआ तो छोटे छोटे जो थे ग्रुप्स, जो माइनॉरिटीज जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक जो प्रॉब्लम है हमारे सामने निकल के आ गई है, क्योंकि यू नो उनका भी एक डिफरेंस जिसको बोल सकते हैं फ्रॉम अदर्स, जो शो कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं और हमारी जो कॉल सेलिब्रेशंस हैं, हमारी प्रोसेसेस हैं, वो सारी डिफरेंट हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर के फैक्टर पढ़े हैं। और अनदर जो एक फैक्टर और जोड़ रहे हैं हमारा इसके साथ हेट्रोजेनेट सोसाइटी का, वो है population explosion। Population in India has been growing phenomenally during the century. Development and welfare programs for the masses have not been able to catch up with the increasing population. Consequently, the benefits of the developmental programs gained by the masses, whose numbers is ever increasing, have been far below the expectation। कहते हैं ये भी एक दिक्कत है, बात कई बार की जाती है सही ढंग से डेवलपमेंट की, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इनके इतने बड़े साइज के ऊपर अगर हमें कोई डेवलपमेंट करनी है तो कई बार सही ढंग से पूरी रीच तक वो बात नहीं हो पाती है, बिकॉज पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो बेनिफिट्स हैं वो सब तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें बहुत और छोटी छोटी प्रॉब्लम साथ में जोड़ के बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी में जो पब्लिक वेलफेयर है उसके थ्रू संभाल पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो हमारे यहाँ पे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कोशिश करते हैं इस चीज को संभालने की, लेकिन फिर भी अगर मेडिकल की बात करें ये चीजें नहीं है, जॉब्स कम है, जिसके कारण स्ट्रीट बैगर्स की प्रॉब्लम भी एक सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है। जैसे रिसोर्सेज ऑफ लैंड, कैपिटल एंड फॉरेस्ट, ये सब चीजें भी एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद हंगर फॉर लैंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन इज इंक्रीजिंग। लोगों में ये चीज भी बढ़ी है कि जमीन जैसे जायदाद जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ाना, that has been increased with a growing burden on the national finance, the welfare programs and social services like education, health, employment, रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीजें जिसको बोलते हैं ये एडवर्सली इफेक्ट हुई हैं। मैंने अभी आपको जैसे अभी बात की कि हेल्थ की कोशिश की जा रही है टू गिव द बेनिफिट टू द पीपल, लेकिन ये पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है ये चीज। तो दिस इज द मेन कॉज जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इसके साथ उन्हें बोला एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। हम जितने लोग बढ़ेंगे जगह रहने के लिए चाहिए, तो डिफॉरेस्टेशन भी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे आगे जो प्रॉब्लम है वो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे रेन की, सॉइल इरोजन की, फ्लड्स आने ज्यादा शुरू हो गए हैं, स्कार्सिटी ऑफ फॉडर फॉर एनिमल्स, चारा नहीं मिलेगा एनिमल्स को खाने के लिए। ठीक है, तो ये आगे आगे जो गरीब लोग हैं उनके लिए और जो है दिक्कत वो बढ़ती जा रही है। सो ये कुछ उन्होंने डेटा हमारे सामने रखा हुआ है। सो ये that's the end of this thing। I'll not go further। cultural elements हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, I'm stopping my lecture over here। if you have any of the question you can ask me, or I would like to stop the recording over here।